यो व्हाट इज अप माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू थॉटकास्ट। मेरा नाम है आदित्य बजाज और आज हम आप सभी के चहेते मोहित सर को वापस लेके आ गए हैं। आज हम मोहित सर के साथ बैठेंगे एंड वील डाइव डीप इनटू द वर्ल्ड ऑफ सीपी। सीपी व्हिच इज नॉट कनॉट प्लेस बट कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग। सो बिफोर स्टार्टिंग आई वांट यू गाइस टू जस्ट पहले हिट द सब्सक्राइब बटन ताकि आई कैन ब्रिंग मोर अमेजिंग गेस्ट एंड हैव मोर फन कॉन्वर्सेशंस। इन दिस कॉन्वर्सेशन वी डाइव्ड, मतलब हमने हर चीज कवर कर लिया, फ्रॉम बेसिक्स टू इंटरमीडिएट टू एडवांस। सारे रोड मैप्स फॉर फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर, देयर इज अ लॉट दैट इज कवर्ड इन दिस एपिसोड एंड द सुपर फन एपिसोड विद सबके फेवरेट मोहित सर स्टार्ट्स इन 3, 2, 1। हेलो सर, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सर? थैंक यू, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस अगेन। हाउ हैव यू बीन? Yeah, I have been good. So I have traveled to a lot of places in a past few months, and now I am finally back here. सर आप आ गए हैं और हम सीपी की बात ना करें, ऐसा तो हो नहीं सकता है। बट अभी रिसेंट टाइम्स में हमारे कॉलेज इटसेल्फ हैज अ हाइप और फसाड ऑफ सीपी। एंड बिफोर डाइविंग डीप इनटू इट, आई जस्ट वांट यू टू टेल टू स्टूडेंट्स और whoever is listening कि व्हाट इज सीपी इन वेरी सिंपल वर्ड्स। क्योंकि ना वर्ड सुनने में थोड़ा डरावना सा लगता है, कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग, एक तो प्रोग्रामिंग ऊपर से कंपेटिटिव। Okay. थोड़ा सिंपल वर्ड्स में आप बता दो So, अगर। like, I will break it down into like very simple terms. So, do you play badminton? हम्म। Okay. So, when you go to the court, there can be multiple things that you can do, right? You can go for some drills, you can practice, and you can go for some practice matches as well, and even you can go for tournaments as well, right? So basically, practicing on a court is termed as practicing DSA. Fine. When you go to a tournament to play, where we have rankings as well, हाँ, fair. fine, that who has a better problem solving ability, Yeah. who has like learned DSA to a great extent. Hmm. So we have something known as a leaderboard over there, right? Hmm. So when it comes to CP, Mm-hmm. it is about just showing off your skills that you have learned. Got it. So basically, DSA is a practice round of algorithms, and तुम्हारा DSA competitive. is the basics, right? For Got it. example, when you practice different drills in badminton, you combine it all Hmm. and then you go to play a match, right? Got it. So it is like that. Fair. It is And not much like distincted from DSA, but it is like involving different concepts of DSA to solve a particular problem. गॉट इट, मतलब डीएसए बेसिक्स हो गए। अब सीपी की तरफ आएंगे तो इट्स अ बेसिकली टूर्नामेंट अक्रॉस ऑल प्लेयर्स जितने होते हैं, यूजुअली इट्स अराउंड द कंट्री और अराउंड द वर्ल्ड, एंड देन दे compete using those basic concepts of DSA to solve a particular problem. Yes, basic and advanced concepts, whatever we have learned, different techniques, we use them, we combine them to solve problems that are there in the challenges. गॉट इट। एंड मतलब अगर किसी को अभी स्टार्ट करनी है तो कोई उसके प्री रिक्विजिट्स होते हैं, कोई स्किल्स एक बंदे में होने चाहिए इस तभी वो स्टार्ट करे, समथिंग दैट इज नेसेसरी बिफोर स्टार्टिंग अ सीपी? So the first necessity is that you should be knowing a language. ओके। Fine. कौन May सी it be लेकिन? C, C++, Java, Python. आप कौन सी रिकमेंड Everything करोगे? is like in every language हाँ, you can do DSA and CP. Fine. बट आप कौन सी रिकमेंड करोगे? I recommend you to go for C++ or हाँ। Java. Why so? मतलब यूजुअली इट इज ऑल्सो प्रमोटेड, सीपीपी इज मोर प्रमोटेड देन जावा, ऐसा भी क्यों है? क्योंकि सी प्लस प्लस और जावा के बीच में भी एक, दोनों कम्युनिटीज के बीच में एक क्लैश रहता है हमेशा। Okay. So if you talk about dev, fine. Java is like more widely used. C++ are not used over there. गॉट इट। There are some simple basic applications like Microsoft Foundation classes and all in CPP, but Java is like core for dev, you can say. But if we talk about competitive programming or if we talk about problem solving, right? C++ has a greater or big community, गॉट इट। you can say. तो फिर बेसिकली द थिंग इज सीपीपी के रिसोर्सेज इजीली अवेलेबल हैं, Yes, तो इसलिए लोग सीपीपी को ज्यादा प्रेफर करते exactly. हैं। मेक सेंस। एंड नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट फर्स्ट ईयराइट्स एंड सेकंड ईयराइट्स। बेसिकली अगर कोई फ्रेशर अभी नए नए, अभी रिसेंटली टर्म स्टार्ट हुए हैं हर कॉलेजेस के, if they want to start competitive programming, then what roadmap will you guide them? Okay, so there's a basic roadmap if a first year is trying to
go for DSA and CP. फर्स्ट और सेकंड, क्योंकि दोनों के पास इनफ टाइम है आई फील. Okay, fine. So the first thing is that you have to learn a language. Fine. As you wish, you can go for C++, you can go for Java. Fine. I would recommend not going for Python right now because Python is a comparatively easier language. So if you are able to learn C++, Java, you basically learn the core of all the languages. You can switch to any other languages in the future. Fine. So first is that you have to learn a particular language. The second thing is that you have to start data structures in that language. ठीक है. You have to learn different data structures that are used. Fine. So data structures do not depend on the language. Fine. They are basically you can say containers in Java. Different containers are there in Java, and you can learn them in Java also. Fair. In C++, we have STL, which helps us to code. And apart from that, we have to learn data structures also. Implementing the data structures, we can use this STL or the containers in Java. Fair. The second thing is that they have to learn data structures. एक सेकंड, मैं यहाँ पर एक पॉज लूंगा. अब डेटा स्ट्रक्चर इटसेल्फ इज अ वेरी वास्ट टॉपिक, ठीक है. उस अम्ब्रेला के अंडर इज देयर अ पर्टिकुलर सीक्वेंस दैट यू मतलब सजेस्ट और रिकमेंड टू द स्टूडेंट्स? बिकॉज इफ यू डोंट, आई फील, जब मैं अपने टाइम पे पढ़ रहा था, कि अगर तुम एक स्ट्रक्चर्ड वे में ना पढ़ो उसे, देन वो दिमाग में खिचड़ी बन जाती है. तो व्हाट इज द स्ट्रक्चर दैट यू फॉलोड अपने टाइम पे और यू रिकमेंड स्टूडेंट्स टू फॉलो कि डीएसए के कॉन्सेप्ट्स उस सीक्वेंस में करो, सो इट वुड बी इजियर फॉर एवरी कॉन्सेप्ट टू बी अंडरस्टूड? Fine. So there is a sequence. You can like find different roadmaps which lead to them, but the crux of all those roadmaps is the same. So you can find the link in the description. Wow. I will like give you the link. Done. I will just guide you through the roadmap and in what order you have to follow data structures. And algorithms. First, data structures. Got it. First, you go for data structures, then you go for some advanced data structures. After that, we deep dive into the algorithms. Okay. Right? So there are different algorithms, and students can learn those algorithms. After like you complete algorithms, you are totally ready for problem solving. Now you have to use all these data structures and algorithms to solve a particular problem. So then basically we say that we go with CP. Got it. मतलब पहले एक लैंग्वेज पकड़ी, वो लैंग्वेज सीखी, बेसिक सीखे, उसके बाद उसी में डीएसए के कॉन्सेप्ट्स अपने बेसिक से ऊपर मास्टर्स करते गए ताकि हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी हमें आ जाए. Exactly. Then we switch to CP. Exactly. So there are different techniques to solve the problem. Use of data structures will be there, use of algorithms will be there. You have to mold them into one single code to solve a problem. Fair. Also, CP के बहुत सारे platforms हैं. मतलब there is CodeChef, Codeforces, LeetCode also has a contest वाला scene. But what is the one that you recommend कि एक platform पे stick करके कौन सा आप recommend करते हो? Okay. So if you're going for DSA in the start, first thing that you have to do is go for standard questions. Fine. So LeetCode and GFG is the like most recommended platform from my side if we talk about going for standard problems. ठीक है, fair. Right. Once you complete all the standard problems, you can go with CodeChef and Codeforces problems. Right. So there's a problem set in both. You can go with that as well. Apart from that, I recommend you to start giving the contests from the start as well. Once you learn a language, you start with DSA and simultaneously you make a profile on CodeChef and LeetCode. Obviously, LeetCode also has contests. GFG has contests, but they are not very regular. So you can go with LeetCode. LeetCode has a bi-weekly contest that is there on Saturdays and a weekly contest that is there on Sundays. Apart from that, you can go with CodeChef. CodeChef has a contest on Wednesday. Right? So I Every recommend Wednesday you, 8 p.m. Yeah. So I recommend you to go for contests just because it basically gives you the ability to look into different problems. Right? There are no repeated problems in these contests. Yeah. Every problem is new. Every problem is like curated very perfectly. You can go with that. You can have a hang of different problems that are there. एक बार आप कोई नई चीज़ की आपको आदत पड़ जाती है ना कि ये क्वेश्चन मैंने पहले कभी नहीं देखा है लेकिन आज मैं इसको पहली बार देख रहा हूँ एंड आई एम सॉल्विंग इट. यू गेट कॉन्फिडेंस ऑल्सो एंड आपको नई चीज़ें देखने की एबिलिटी भी मिल जाती है. So when in future, when someone will be asking you a question that is like not in your standards that you have already learned, so you will not get panicked at that time. You will be like, यार मेरे को तो problem solving करने की ability है ही है. मतलब यूजुअली यही होता है ना कि तुम एक ही टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करते रहते हो, बट इन कॉन्टेस्ट में ऐसा नहीं है, हर बार नई प्रॉब्लम आ रही है. फेयर. बहुत सीरियस हो गया थोड़ा. लेट्स जस्ट डॉबल इट डाउन. सर, आप अपने टाइम पे सीपी में कैसे कूदे?
how was your journey of being a 6-star coder and a candidate master? See, so this question was basic, like I will answer this question in a very different way. जैसे like सब लोग इसको देखते हैं उसी तरीके से I will answer this question. Obviously बात है, placements is one of the most important factors. Fair. At our time also, when we used to talk to our seniors, they used to guide us कि यार placements चाहिए, TSA कर लो, ठीक है. When I came to it, हाँ मुझे समझ में आया कि ये सच्चाई थी, इसमें कोई डाउट नहीं है. So वहीं से I started with DSA only. I followed the same roadmap. उसके बाद CP has no limits. Fine. Practice has no limits. You can have unlimited questions on a particular topic. Fine. You can have a mix of topics. In that also different contests are there and everything. So the crux is that placement was the driving factor, which actually guided me through competitive programming. Fair. And मतलब now I get you why आप कैसे कूदे सीपी में, but at the same time अभी बहुत से लोग भी थर्ड और फाइनल ईयर में होंगे, अब उन्हें भी प्लेसमेंट्स एंड इंटर्न्स चाहिए. सिर्फ सीपी के बेसिस पे इंटर्न या प्लेसमेंट लग जाएगी, इज दैट ट्रू और नॉट? एंड इफ नॉट और इफ यस, उन्हें क्या रोड मैप फॉलो करना चाहिए? Okay, so this is actually partially true and partially wrong. या Fine. इसलिए पूछा मैंने क्योंकि मेरे को पता है. Most of the companies hire freshers seeing their problem solving abilities. Like this is a trend that is going on. There are some companies who hire for a specific role. Majority of the companies hire freshers as a generic role. They push them, they like recruit them, and they push them into different domains, we can say. Fine. Because they think that if a person's problem solving abilities are really good, he will be able to learn anything. Agreed. Right. For example, like students these days are asking me, sir, we should start with machine learning, we should start with the क्योंकि उसका बूम भी चल रहा है. Yeah, so there is a boom for that. Python सीखनी चाहिए कि नहीं अब? Exactly. So I will say that if you go for the basics first, that is DSA, and learn a good amount of coding, after that you can switch to any domain. Got it. See, any domain in C++ requires coding. Fair. You will agree with me. Yeah. So if we go with DSA first, if we clear the basics, we are able to go into any field. हाँ, मतलब switch करना easy हो जाता है. Exactly. If I talk about myself also, C++ I knew from the start. It took me just a week to switch to Python. I agree. Right? It just took me a week to switch to Python. Fair. मतलब एक बार क्रक्स पता लग जाता है ना, वो कॉन्सेप्ट्स पता लग गए तो तुम्हें सिंटैक्स चेंज करने में हार्डली the for loop that is लगता है. Yeah, the for loop that is there in C language, it is also there in C++. Conditional statements वही है. Exactly. In Java it is same, in Python also the same, in Ruby it is the same. Syntax में थोड़ा बहुत चेंज होता है. Exactly. बाकी it's just the concept that is important. I feel. Fair. Now I want to further ask कि there is also this thing कि DSA या CP सिर्फ वो करते हैं जिन्हें मैंग में जाना है. Okay. Does DSA and CP, help people in their tech careers or tech interviews, or are there any other opportunities that they can get through DSA or CP? See, as I told you that companies basically try to hire freshers based on their problem solving abilities. So DSA and CP you can say is the most important aspect where companies can test your problem solving abilities. Right? Like for example, आपने देखा होगा aptitude भी companies test करती हैं, right? So that is also based upon problem solving abilities. Fair. So they want a person who is able to solve different problems that arise in their company, right? Domains as such, companies do not ask for from freshers. Okay. I can say. Yeah, but if you are into development and you have made different projects, and if you are into machine learning, you have embedded machine learning with dev, right? So these can act as a plus point in your CV, but these do not act as the only point in your CV. Okay. Fine. If you don't know coding and you have made these projects, first of all, how is this possible? कैसे possible? Fair. How it is possible? ठीक है. Right? If you don't know how to code, if you तो vibe coding के नाम पे तुमने GPT ही करा है. Exactly. Fair. Right? So ये तो basic है. सबसे पहली चीज तो यही करनी है. उसके बाद तो आप आगे you can switch to different domains, you can go for that. Fair. No issue. मतलब whatever your interest is in, basics तो करने ही है ये वाले. Exactly. This is a mandate for everyone. मतलब. Exactly. Fair. Okay. One thing that CP I feel everybody faces is pressure. क्योंकि उसमें ना DSA जब तुम पढ़ रहे होते हो तब इतना कुछ वो नहीं होता, कंपटीशन या कुछ.
वंस यू स्विच टू कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, उसमें रेटिंग्स इन्वॉल्व हो जाती हैं. तुम्हारे पियर्स जितने होते हैं, किसी की रेटिंग बहुत ज्यादा होती है, किसी की रेटिंग बहुत कम होती है. हाउ डू यू हैंडल दैट प्रेशर, और हाउ डू यू नो कीप योर माइंड सेन इन दैट प्रेशर? कि मतलब देयर आर पीपल आई हैव सीन, इवन आई माई सेल्फ, आई वाज लाइक, जब मेरी रेटिंग गिर रही थी, आई माई सेल्फ स्टॉप्ड प्रोग्रामिंग फॉर अ व्हाइल बिकॉज़ आई वाज लाइक नहीं चल रहा है. उससे कैसे बचें और कैसे अपने दिमाग को सेन रखें while staying consistent? Okay. So you play cricket. I saw you playing cricket. हाँ जी. Yeah. Right. So when you go to bat, हाँ. क्या कोशिश करते हो? ज्यादा रन मारे. ज़्यादा रन मारूं? हाँ. ये तो नहीं सोचते कि यार ये तो प्रैक्टिस मैच है, या ये तो इट्स लाइक अ जनरल गली क्रिकेट काइंड ऑफ थिंग, नहीं. ठीक है, हाँ. कि मैं आउट हो जाऊं. हाँ. यू fair. ट्राई टू प्ले As good as possible. as good as possible. Yeah. Right. So this is the answer to your first question. Fair. Right. हाँ. कि अब हमने डीएसए पढ़ ली, हम्म. अब मैं अपना टैलेंट कहाँ दिखाऊं? हम्म. ठीक है, तो टैलेंट तो Yeah. मुझे दिखाना है. हाँ. अब टैलेंट दिखाना है तो आई हैव टू डाइव इनटू समथिंग दैट हैज अ लीडर बोर्ड. हम्म. ठीक है, Yeah. तो पीपल डाइव इनटू सीपी आफ्टर दैट. Got it. ठीक है, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग. ओके, तो वंस यू गो देयर यू सी कि यार अब ऑब्वियसली बात है, इंडिया में भी कितने अच्छे खेलने वाले लोग हैं, क्रिकेट खेलने वाले भी बहुत, सचिन जी, कोहली जी, धोनी जी, सारे हैं. ये तो है. लेकिन अगर इसके अलावा तुम किसी गली में भी जाओगे, यू विल सी कि यार वहाँ पे एक बंदा होगा जो बहुत अच्छा खेल रहा होगा. रिंकू सिंह. ठीक है, एनीथिंग. तो लाइक अब यहाँ से तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर निकल के आता है Fair. कि अब जब तुम कंपटीशन में डाइव इन किए, हम्म. तो ऑब्वियसली यू विल सी कि यार लोग तो कर रहे हैं हम्म. और लोग अच्छे भी हैं उसमें. तो आई कैन से कि हाँ, थोड़ी डिमोटिवेशन आती है, नो डाउट अबाउट दैट. तभी मैं किसी को भी रिकमेंड करता हूँ, मेक अ कम्युनिटी एंड देन डू सीपी. मतलब साथ मिलके करो. एग्जैक्टली. अब यही होता है ना कि किसी किसी दिन तो यार सचिन भी जीरो पे आउट होते हैं, राइट? सो इट इज लाइक Fair. दैट कि अब एक कॉन्टेस्ट है, किसी दिन हाँ. तुमसे एक क्वेश्चन भी नहीं निकला उसमें, पीपल गेट डिमोटिवेटेड आफ्टर दैट. वो होता है कि उस दिन स्ट्राइक नहीं कर बिल्कुल रहा. होता है. गॉड. राइट. दैट इफ आई you can say that if I have a fight with my friend and then I go home and give a contest, तो fine, फिर तो मुश्किल है. your mind will be diverted in different areas हम्म. and you won't be able to like perform that good in the contest. मतलब हाँ, फेयर. इफ यू आर डिस्ट्रैक्टेड, तुम कैसे फोकस कर पा रहे हो? Exactly. मेक So सेंस. this is a thing which takes time. ठीक है, आज मैं भी ये नहीं बोल सकता कि मेरे पास कोई भी एक प्रॉब्लम ले आओ, नहीं, हाँ. and I will be 100% able to solve that problem. So there is no 100% in this DSA and CP thing. मेक सेंस. You have to put efforts consecutively. धीरे धीरे करके you have to put efforts so that you become better and better. That's it. मेक सेंस. You make a community, 4 people, 5 people, sit in a room, give the contest. I'm not asking you to cheat. It is like you give your own contest. हाँ. It is for practice. It is for your practice, right? So the final goal is that you get a good placement. And if you are into competitive programming, you get on the top of the leaderboard. फेयर. और तब कॉन्टेस्ट में प्राइजेस भी बहुत होते हैं. दैट इज आल्सो एन इंसेंटिव Yeah, फॉर अ that लॉट is ऑफ also an पीपल. incentive. But the main goal is placements. Exactly. Got it. So I feel we've covered a lot. The basics, what is the roadmap? Just start with any language you like, probably CPP or Java, then learn DSA basics. मतलब enable yourself कि तुम एक problem solve कर पाओ. Then switch to CP. Do it in a community. अकेले मत करो, थोड़ा depressing हो जाता है. Community में करो, साथ करो, cheating मत करो. And I feel it is something fun and every See, engineer should cheating, try. I want to हाँ जी. emphasize more on that. Don't cheat. The reason for that is this is just a practice. What is your final aim? Your final aim is Placement, right? You are giving an interview. We are sitting face to face. How can you cheat there? How will ChatGPT help you over there? Right? मतलब तुम खुद से भी honest नहीं हो ना at that point. हाँ, like you are doing it for your own good. Final aim तो placement ही है, तो आज cheating करके क्या मिलेगा? I agree. For a few marks, you think that you will be able to cheat? मैं नहीं करता सर. नहीं, I'm just like I'm being very general because these days ChatGPT has I agree. ruined the era of competitive programming that it used to be. ChatGPT का मतलब whenever there is a contest, I can see solutions coming randomly on WhatsApp, Telegram, फिर YouTube पे भी लोग randomly post कर देते हैं and सब वही डाल रहे हैं फिर. See, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी रेटिंग बहुत अच्छी है, इसलिए आपको कोई कंपनी ले लेगी, नहीं, ऐसा नहीं होता है. You are a 5-star coder and if I ask you to write a simple code and you are not able to write that, that actually shows the interviewer that you have cheated. मतलब उन्हें पता लग जाएगा. Exactly.
they'll figure out. वो ऐसे ये नहीं है कि वो आज पहले जने हो तुम किसी का Exactly. इंटरव्यू If ले you रहे think that your friends cannot figure out, हैं हाँ they can also figure out. It's very easy. I agree So for what you are cheating? मतलब वो पता लग जाता है ना जब एक कंपनी की शॉर्टलिस्टिंग आती है और कुछ बच्चों का नाम होता है तुम्हें पता होता है कुछ तो इसने करा है देयर इज समथिंग रॉन्ग दैट ही और शी हैज डन Yeah. So but you will see कि final selection में उनका नाम नहीं होगा. फाइनल सिलेक्शन में किसी कभी नहीं आता उनका कभी नाम नहीं आएगा Because उनका वो नाम. पहले इंटरव्यू में ही बाहर हो जाता है Exactly. व्हिच इज वेरी फेयर मतलब तुम कब तक ही जीपीटी के सहारे चलोगे Exactly. तो तुम्हारा मोटिव जो है उसको नहीं भूलना ना. which is fair I feel we've covered everything sir आपके कोई closing arguments if you want to share your thoughts The main thing that I want to share is if you are in first and second year, please give your time to DSA, fine, and competitive programming. Because competitive programming will help you get better. DSA, it's fine that you have done like everything, but if you see a new question, then to get a like daily hang of those new questions, you can go for CP. I would recommend. And apart from that, if you are in third year, so the major thing that you should do is start with DSA right away, today only. If you are in first year, you still have time. You can take 3 to 4 months. You can figure out. You can listen to everyone. You can talk to your seniors. You can talk to your teachers and everyone, and you can just figure out what is happening. In second year, uh, everyone should at the end of second year, everyone should know what is at least basic DSA. And if you are in third year, you don't have any time. Please start with it right away. I agree Fine. And if you are in fourth year and you have missed the bus, क्या कर रहे हो so the suggestion is that don't get disheartened. Fine. You can start any day. Fine. It doesn't matter. ठीक है fair Life is like very long. You can start any day. So it is not like if you're not getting placements on campus, you can try off campus as well. yeah. Fine. So you can take your time, give 3-4 months to DSA, and after that you can go for off campus placements also. There is no harm in that, which is fair which is fair. मतलब तुमने अब 2-3 साल पढ़ाई नहीं करी Exactly. तुम्हें 1 साल कुछ तो करना ही पड़ेगा हाँ. बट थैंक यू सो मच सर फॉर एनलाइटनिंग अस एंड एक बार बस कैमरा की तरफ देख के बता दो आपको एक्सपीरियंस कैसा लगा और सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिए प्लीज Okay, so yeah, so this is a good initiative that we have started making videos on topics that actually matter. ट्रू So I would suggest that you should like, share, and subscribe to the channel so that. सब्सक्राइब टू थॉटकास्ट बोल दो आप बस बोल दो Okay, so please subscribe to ThoughtCast. थैंक यू सो मच सर Thank you so much for listening till this point. If you've loved the conversation, or if you've learned something from the conversation, do share it with your classmates, your friends, wherever you can. And I just want to, take this moment for a while and just thank Vikas sir and Mohit sir for giving me this opportunity and believing in me. So that's it from my end. I'll see you soon with yet another episode with a very fun guest very soon. Thank you so much.